national level of floodlight tennis cricket ball of the last match of the on the league stage, and after that we have 8 teams qualifying for the quarter-final, and here's the signal coming from the umpire. We have Santu and Shiva. Suman starting the proceeding, coming from G. Shankar, and starts with a single. With that, the team Dreams 11 Chennai are off the mark with a single. It's a do-or-die game for the team Dreams 11 Chennai if they want to stay alive in this tournament. And this time the ball keeping very low. The batsman too early to play that shot, missing it completely. A dot ball resulted on the previous game. RANGA 11 Bangalore have won the game quite comfortably by beating the opponent. The two openers have dominated out in the middle. So this time that's another wonderful legal delivery ball by. That's a one bounce signal coming from the umpire. That's a fake call coming from the umpire. That was the quick one ball by Siman, the batsman. Shiva too early to play that shot. And this time drives it over the cover fielder. Will the ball carry to the boundary up, or the mid-off fielder will stop the ball racing to the boundary up? In the meanwhile, the batsman looking for the third run. There's a chance for a nut if it's a direct hit. An umpire straight away going for the third umpire. It was a close call, but from this angle, definitely the batsman Shiva might be in his batting crease on the non-strikers end. So let's wait for the decision coming from the third umpire, whether it's an out or not out. I request Mr. Dinesh Karkar, please can you come to the commentary box. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತ 7 ತಂಡಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕಪ್ಲು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಮಗವೀರ 11 ಮಂಗಳೂರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್. ಈಗಾಗಲೇ 7 ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ 7 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 8ನೇ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಂಗ 11 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಚೆನ್ನೈ ಡ್ರೀಮ್ 11 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ತಂಡಗಳು 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಅಪಜಯ ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಂಡ ಬಹುತೇಕ 8ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 2 ತಂಡಗಳ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೆನ್ನೈ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು And the decision coming from the third umpire, the batsman is safe in his batting crease. A not out signal coming from the umpire, and the batter Shiva safe in his batting crease. ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೆನ್ನೈ 12th ಮ್ಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಟಿ ರಂಗ 11 12 ಆಟಗಾರರು. Still 2 more ball left in the over number 1 to be completed. That was a quick one. The batter Santa going for a big hit. He knows that the power play has been introduced. Just the 2 fielders are kept outside the 30-yard circle. Both are on the onside region, so it's trying to play toward the offside region
making room. But this time he has to depart. That's a yokel and the quicker one. You miss, I hit. That is what we normally call. What a finish for the over number 1, Suman. Getting a breakthrough finally in the last ball of the over number 1. And the batter, Santu, has to depart after scoring just a single run for his team. Over number 1 coming to an end. The score is on 4 for 1. ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಸೌಜನ್ ಪಡುವಿದ್ದರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯಕರು ಡೇವಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ರಂಗ 11 ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಗವೀರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪಲ ಪರವಾಗಿ ವಿತೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೆನ್ನೈ 12th ಮ್ಯಾನ್ So change the ball again coming from the Kings property and we have Vimal starting with the dart ball. There was an appeal but umpire says the bowler was right in front of him. That was the reason the umpire could not judge whether it was a leg before or no. And the second ball, another dot ball. The batter Shiva missing. ಇವಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ, ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಂಡ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ತಂಡಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಕೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಾದಂತ ತಂಡಗಳು ನಾಳೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಂಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಂದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, 2-2 ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, 3-3 ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, 4-4 ಈ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So both the openers of Dreams 11 Chennai are back into the pavilion. Vimal striking on his very first over. At this time the batsman has hammered towards the deep wicket region for another 2, and the tall man of the Dream 11 Chennai Ratnam is the man. Got off the mark in the very first ball, and we have the last ball of the over number 2 to be completed, and that would be the last ರಾಮಾಂಜನೇಯ ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3 ಮಗವೀರ ಮಂಗಳೂರು, ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಂಬರ್ 4 ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಂಬರ್ 2 ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಂಬರ್ 3 ಜಾನ್ಸನ್.
ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ. ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತಂಡವಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೋ ಅವರು ನ್ಯಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಂಬರ್ 2 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರ 11 ಆಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಗವೀರ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Suman coming back to ball the second over of his spell. Just conceding just a single run in this over. Nothing much on the scorecard. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಂಗ 11 ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಜಯಿಸಿದ್ರು ಆ ತಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. A single conceded in the form of a bye and one more extra added to the total. The score slowly chipping to 9 on the board. Over number 3 in progress. Suman. And this time luckily there is no ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ. 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲ ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಗವೀರ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೀಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Vimal once again coming back to ball the second over of his spell. So far after the completion of 3 overs, the score is on 10 for 3. Venkat on the non-strikers end and Deepan on the strikers end was playing on 3 for his side. Defensively played straight back to the bowler. And that's a full respect given to the bowler on his own bowling mark. Defensively played by Deepan. Vimal, second time. Play to the point region. There is a chance for a not if it is a direct hit, but the batsman safe in his batting crease because the throw was not fine from the point fielder. It was wideish towards the wrong side of the wicket keeper, and the batsman Venkat safe in his batting crease. Yet to get off the mark after facing 3 balls.
This time played towards the widest of the coverage, and will the ball race the boundary up, but the long off fielder is quite good enough to save at least the 2 runs for his side, and Venkat getting off the mark. 2 runs adding to his individual account, and the team total jumping to 13 for 3. You can see the fielders of RANGA 11 Bangalore. They have kept their strong fielders inside the 30-yard circle. This once again driven to the coverage, and this time the batsman should be only happy with a single. The feeder was quite quick enough. It was firmly hit right in the middle of the bat, full face of the blade. At the end, one more run adding to the total of Dreams 11 Chennai. Yet to see some big hits coming in the batters of Dreams 11 Chennai. Going for the reverse sweep. There is an appeal, and umpire raises his finger, and the batter Deepan could not believe it. Might be that's a fair call at the last moment. The batter going for the reverse sweep, missing it completely. And he has to depart. That's another wicket fallen. The 4th wicket has been fallen at the score of 14 on the board. I would like to ask the new batsman of Dreams 11 Chennai, please can you just enter the field? There is no third umpire for the leg before. Umpire decision will be the final one. I would like to ask the batter Deepan, can you just make your way back to your pavilion? So change the ball again. The first 4 overs, the score is only on 14. The 2 bowlers, Suman and Vimal, have done their part. They bowled their individual 2 overs, and now the ball has been handed over to Sandy, starting with the dot ball coming from G. Shankar end. And this time getting an outer edge, straight to the wicket keeper, and the keeper doesn't miss those kind of simple catches, even though he was quite closer to the stumps. Another wicket fallen. The half of the side of the Dreams 11 Chennai are back into the pavilion at the score of just 14 on the board. Can it be once again a low score for the team RANGA 11 Bangalore? Bharat is a new batsman, joining the company of Vivek, who's on the non-strikers end. And Bharat getting off the mark with a single towards the wideish of the deep point region to get off the mark with a single. The team total slowly jumping up to 15 on the board.
Another single adding to the total. Slowly the score of Dream 11 Chennai. Going for the reverse sweep, connecting right in the middle of the bat. Another 2 runs adding to the total. Coming in the bat of the tall man Bharat. Getting 2 runs for his side. This time playing onto the onside rim for another single. Slowly the score chipping up. After the completion of 5 overs, score is on 19 on the board after the loss of 5 wickets. Change the bowling and coming from Kins property, and we have Imad Ilo. Another experienced bowler coming from RANGA 11 Bangalore. So far the score is just on 19 on the board. And a first ball, a back foot punch over to the point region, and there is a fielder kept on the protection of the deep. An excellent work by the fielders of all the fielders of RANGA 11 Bangalore, out doing a wonderful job out in the middle. The quick runners have been kept on the deep on both the ends, on the offside as well as on the onside region. This time will the batsman cross for the second run? They had an ample of time. This time the short third man region fielder had to cover. So the first 2 ball, 2 back-to-back 2 runs have been scored by the batter, and this time firmly hit, but finding a fielder in the long leg region just for another single. The tall man of Dreams 11 Chennai, Bharat, scoring some quick runs for his side. Look at the way how he has converted the singles into double. Is playing on 10 runs for his team. Out of 24 runs, 10 runs have been conceded at the bat of Bharat. Finally, relief for the bowler, Ilu, getting a dot ball, which is much needed at this time, because we have seen the team bowlers of RANGA 11 in the first game. They have restricted the opponent team for 32 runs. This time a slower ball played towards the onside region, towards the back foot of the square leg region. Umpired once again an excellent running between the wicket. This time Vivek taking a charge, well supported by Bharat for another 2 runs. 7 runs have been conceded this over so far, bowled by Ilu. So this can be the most expensive over so far in this game.
Apart from all the other bowlers have bowled an excellent spell. Now going for the reverse sweep. There is a man underneath. He doesn't drop those kind of catches, but at the end the catch has been put down. The fielder himself cannot believe it that he has missed such an easy catch which has been straight under his hand on his fielding position. Even the rest of the fielders, even the bowler himself cannot believe. I would like to ask the owner of Kudla Cheese, Mr. Sandesh, wherever you are, we hardly welcome you to gather on this a wonderful stage which has been kept next to the commentator box. I would like to ask the owner of Kudla Cheese, Mr. Sandesh, on behalf of Maruthi Yuva Mandala, Maruthi Cricketers, Mogavir, welcoming Mr. Sandesh, the owner of Kudla Cheese, onto the stage. The first two ball of the over number 7, conceding 2 back-to-back dot ball, and then a single finally getting from the bat of Vivek on the onside region toward the short final region for another single, and the team total slowly shipping to 28 for the loss of 5 wickets. Still we have just 9 more balls remaining before the end of the first innings. The winner will qualify for the quarter-final match. Definitely the favourite will be none other than the team RANGA 11 Bangalore, because they have already won their opening game by keeping with 10 wickets in hand, chasing a target of 32. They have chased within 2 overs, so definitely their run rate is quite high compared to the other end of the Dreams 11 Chennai. They have lost their first game and they have scored only 30 runs. Even the 30 runs was quite tougher for the opponent team to chase that, but still finally they managed to get a win. This time a loser when the batsman, but too early to play that shot. Another dot ball, an excellent over ball by Sandy, just conceding 3 runs in this over, and the score slowly shipping to 30 on the board. A final ball remaining in the over numbered 7, coming from G. Shankaran. Going for the reverse sweep. Wicketkeeper misses it. There is a chance for an out, and that's a fair call coming from the umpire. Even the tall man Bharat could not make his way onto the batting crease on the down strikers and has to depart in a form of a run out. That's a quick field done by the most experienced player behind the stump. The most experienced player of RANGA 11 Bangalore, Manjan, doing an excellent work behind the stump. Bharat desperately wanted to be on the strikers and to face the next over, that is going to be the last over of their innings, but unfortunately has to walk back to the pavilion in the form of a run out. So over number 7 coming to an end. The score is on 30 for 6. So final 6 ball. The ball has been given once again back to Ilu to bowl the last over. Even though he's conceded 8 runs, he has an ability to bowl a couple of dot balls and pick a wicket for his side. Can they restrict
Dreams 11 once again. Anything less than 35 will be a chaseable target, which will be chased by the batters of Dreams 11 Chennai within. The team RANGA 11 Bangalore will be able to chase the target, whatever it's been set within the short over. A run-out chance missed once again. The batsman Manoj playing a pull shot towards the fine leg region. The fielder was quite quick enough, but desperately wanted to come back to the second run. Manoj getting off the mark in the very first ball. 5 more balls remaining for the over number 8 to be completed, and we have Ilu bowling right arm round the wicket. No hesitation for the umpire to call it as a bye. The two most experienced umpire, we have Raghu standing on the square leg region, and we have Dinesh doing the main umpire work. The stem bowler changing his angle because it's a right hand batsman, Vivek on the striker's end. A huge appeal for leg before umpire and mode. Another extra adding to the total. And the score slowly shipping to 34 on the board. So final 3 ball remaining in this first innings. And Bharat this time the long leg fielder underneath, and this time the catch has been taken quite sharply. It's not so easy to judge under the lights those kind of running catches, but the fielders of RANGA 11 Bangalore have made it quite easier. They have kept their best fielders on deep. And Manoj's short innings coming to an end. Just scoring 2 runs for his side. And now we have the local boy from Bangalore, that is none other than Nishit, will be on the striker's side to face the final 2 balls of this first innings. Can we see some big hit coming from the bat of Nishit? He has an ability to clear the boundary rope. We have seen him playing some good knocks prior to this tournament played in Bangalore. This time going for the big hit, but finding the fielder. The fielder was right on the position, just slightly inside the mid-wicket region, not on the edge of the boundary rope. He knew that the fielder, even though the batsman go for the big hit, the ball will not clear towards the onside region because the wind is falling towards the onside region. So we have the final ball of the innings for the Dreams 11 Chennai. And the final ball, another wicket fall. And now with that, the innings of our Dreams 11 Chennai coming to the score of 34 runs. And that's a hat-trick wicket coming from the bowler of the team RANGA 11 Bangalore. And the credit goes to Ilu. He's been well supported by all the fielders who have taken the
3 catches. The first catch towards the a long leg, getting rid of Manoj, and next the wicket of Nishchit towards the deep mid wicket region, and this time towards the cover region, and that was the wicket of Nitish. So what an excellent over, the last over bowled by Helu, conceding just 2 runs and picking 3 wicket, and a target of 35, which is not a tough one for the team Ranga 11 Bangalore to qualify themselves into the quarter-final. Maruthi Yuaka Mandala Maruthi Cricket is present. Maruthi Trophy 2023, and we have an honorable guest making his way onto the stage, the owner of VK Furniture. I would like to ask all the people who have gathered here to give a lot of applause to the owner of VK Furniture, Vittal Kullal, the director of VK Furniture, who is the person who have rewarded the man of the match reward for the entire game for this Maruthi Trophy 2023. It could be for the Mugavir Premier League, and also we have for this national level Fed-like tennis cricket tournament. So once again, we would like to welcome the owner of VK Furniture on behalf of all the members of Maruthi Yuaka Mandala Maruthi Cricketers Maruthi Trophy 2023, Vittal Kullal, the owner of VK Furniture, the director of the VK Furniture, onto the stage. So over to Ajay Raj for the second innings of this match between Ranga 11 versus Dreams 11 Chennai. So once again, I would like to welcome the owner of VK Furniture, Vittal Kullal, the director, the owner. So on the behalf of all the members of Maruthi Yuaka Mandala Maruthi Cricketers, I would like to ask Sandeep Putran, the ex-president of the Maruthi Yuaka Mandala Maruthi Cricketers, to honor the guest. And also we would like to thank Vittal Kullal for all your sponsors for this wonderful tournament, because it's not so easy to
honored with the man of the match reward for each and every game in this tournament. Either it could be for the national level Fedlight Tennis Cricket Tournament, or whether it could be for the Mogavir Premier League. Once again, thank you, Vichal Kulal, the owner of VK Furniture. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मारुति ट्रॉफी 2023 में बैठे तमाम दर्शक, मुख्य अतिथि जो इस वक्त का बड़े मंच पर बैठे हैं, और उन सभी का हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैच में आते हैं जहां पर कांटे की टक्कर की उम्मीद, 35 रनों का लक्ष्य जो कि इस वक्त विकेट, ये गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया, गेंद को बहुत करारा स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास, और जबरदस्त कैच है, क्या बात है, बहुत ही चमत्कारिक कैच है। फील्डर ने दौड़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर डीप की दिशा में जाकर कैच करने के पश्चात शरीर का संतुलन बनाना था, उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए फीट को बाउंड्री लाइन के पास जाकर रोक दिया, मानो एक शानदार ब्रेक लगा दिया होगा। इस तरह से शानदार कैच लपक लिया गया और पहले विकेट का आघात हो चुका है। थैंक यू। तो जयराज गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, दूर वाले छोर से एक शानदार सफलता उनके हाथ लगी है, क्या कमाल का कैच आउटफील्ड में लपक लिया गया है सलीम स्ट्राइक एंड पर। यह गेंद विकेट और घुमाकर खेलने के प्रयास में कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, हालांकि बैकऑन थी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछलकर आई, उसको ऑन साइड की दिशा में घुमाकर लपेटकर खेलने के प्रयास में थोड़ा शरीर से टकरा कर गेंद निकल गई, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का वैसे भी अवसर नहीं है, और जयराज दोबारा गेंद को लेकर अपने बॉलिंग मार्क की दिशा में बढ़ रहे हैं। रात के 10:10, शानदार मौसम है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है और नेहरू मैदान बिल्कुल इस तरह से दिखाई पड़ रहा है मानो धरती पर कोई चांद उगाया हो। फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी मैदान पर गिरकर बिल्कुल एक तरह से नहाता हुआ ये दृश्य। जयराज की गेंद ऑन साइड पर, खूबसूरत स्ट्रोक है, कलाइयों का बहुत सही इस्तेमाल किया, गेंद को फ्लिक के अंदाज में ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट पर खेल दिया, फ्रंट फुट पर। एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, सलीम के पास, उन्होंने अपना खाता खोल लिया, कुल रन संख्या, हालांकि ये पहला रन बच चुका है, और वो कैच डिस्क्राइब निश्चित तौर पर करना चाहिए। ग्रेट कैचेस कॉन्टेस्ट होता तो निश्चित तौर पर उस डीप में एक्स्ट्रा कवर में लपक लिए गए कैच को देना होगा। क्या जबरदस्त कैच, शरीर का संतुलन, हालांकि पलटकर विपरीत दिशा में दौड़कर गेंद को जज करते हुए कैच करने के पश्चात अपने आप को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकना, यह सबसे बड़ी बात थी, और उस प्रयास में फील्डर सफल हो गए, जबकि गेंद को लेकर जयराज दोबारा तैयार हो रहे हैं। मुरली के लिए और फ्रंट फुट पर, हालांकि ज्यादा मूवमेंट नहीं था पैर का, आने दिया बल्ले पर, अंतिम क्षणों में थोड़ा सा ऑन दी अप गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई, तेज कदमों के साथ मुरली ने अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचा दिया, 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है, 2 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हो मारुति ट्रॉफी 2023, जिसमें इस वक्त कांटे की टक्कर रंगा 11 और ड्रीम 11 के बीच में चल रहा है। ड्रीम 11 के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, निर्धारित 8 ओवर्स में ज्यादा नहीं बना पाए। ये गेंद और विकेट ऑन साइड की दिशा में, जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर भी है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, शानदार कैच, एक और बड़ा विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए, ड्रीम 11 को एक और सफलता।
थैंक यू, क्या बात है, शानदार धुन ढोल नगाड़े वाले बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे की शानदार धुन। पिछला स्ट्रोक बल्ले का 25% निचला सिरा लगा। विठल कुलाल जी, क्या बात है, उनका हृदय से स्वागत है और धन्यवाद अर्पण करते हैं। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हर मैच में उनकी तरफ से दिया जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि एक तरह से इस क्रिकेट श्रृंखला को बड़ा सहयोग है, इस उनकी वजह से हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है, बिल्कुल वीके फर्नीचर की तरफ से। आइए इस गेंद पर आते हैं, रोमांच अभी बढ़ता हुआ। नीतीश वार्म अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर मुरली स्ट्राइक एंड पर हैं। क्या कुछ होता है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 35 रनों का लक्ष्य, जिसमें अब तक मात्र 2 रन बन चुके हैं, 2 शानदार विकेट गिरने के पश्चात। उस छोर से गेंद, ओ द विकेट इस बार, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन देखा गेंद को बहुत जल्दी पहचान गए, थोड़ा सा गेंद के ऊपर आ गए, लाइन के ऊपर बल्ले का महिम सा सिरा दिया गेंद को। 1 रन लेकर अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, रन बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर। शानदार खेल चल रहा है, रोमांच से भरा हुआ है और बिल्कुल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये बाहरी वातावरण जो गैलरीज बनाई गई है। वो छोर से हवा में गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आने के प्रयास में काफी पीछे रह गए। टिप्पा खाने के बाद उनके पास गेंद गई, थोड़ा सा चेक करना चाहते थे बैट्समैन, फ्रंट फुट पर गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया और कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि अगर थोड़ा जोर से खेलते तो कैच में तब्दील हो सकता था। हल्के हाथ से खेलने के प्रयास में गेंद थोड़ा सा आगे गिरी, फील्डर पीछे रह गए, 1 रन लेने का अवसर था, उसे पूरा कर लिया बैट्समैन ने। दूर वाले छोर से किंग्स प्रॉपर्टीज छोर से बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, फील्डर इस बार शायद ही गेंद को रोक पाए, गेंद गई मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक है और अंपायर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उन्होंने संकेत किया कि यह शानदार 4 रन है। इस बेहतरीन मौके के प्रायोजक थे मारुति ट्रॉफी 2023। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो नितेश की गेंद, ये चौके के पश्चात एक और गेंद जिसको खेलने के प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और मुरली स्ट्राइक एंड पर है। नितेश गेंद को लेकर किंग्स प्रॉपर्टीज बैनर छोर से एक और गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, मुश्किल से 8-10 कदमों का स्टेप निकालते हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी, लेकिन एक बेहतरीन चौके से थोड़े से ऑन साइड पर, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है। शानदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली बिल्कुल खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं आज, बड़े ऊर्जावान, बड़े शानदार कमाल की बल्लेबाजी। शॉट ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल कर दिया 4 रनों के लिए। उस छोर से दोबारा आगे निकले, स्टेप आउट किया, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद रेस को जीत गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और शानदार 4 रन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और 16 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, स्कोर इज ऑन 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मुरली ने कमाल के स्ट्रोक्स खेले, जो 3 चौके उन्होंने लगाए, वो बेहतरीन टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ, मानो बिल्कुल गेंद को जज किया हो। श्री विठल कुलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार प्रकट करते हैं वीके फर्नीचर्स का, जिनके शानदार पुरस्कार की बदौलत हम हर एक मैच में जो कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और इनके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत
बड़ा योगदान, आपका सहयोग, जिसकी वजह से इस क्रिकेट श्रृंखला को एक नया आयाम कहेंगे तो कोई गलत ना होगा। ये गेंद इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, गेंद को धीरे से खटबर कर दिया बैट्समैन ने। एक रन लेने का मौका बैट्समैन के पास, एक रन लेकर किरण ने जानबूझकर स्ट्राइक रोटेट किया। मुरली को ज्यादा स्ट्राइक वो देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दर्शकों का मनोरंजन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुरली का बल्ला बोल रहा है, आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं। उस छोर से गेंद और बैकफुट पर गए, क्या फोर्सफुल स्ट्रोक है, पंच किया गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई, एक्स्ट्रा कवर के बाहर, 4 रन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा चौका मुरली के बल्ले से, और विकेट इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट किया और ऑन साइड की दिशा में लपेट कर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए गेंद को वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया। 1 रन चुरा चुके। पिछला वो स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया गया था बैकफुट पर। अंदाजा लगाइए, कोई कह रहा था कि शाम के बाद आउटफील्ड में गेंद धीमा ट्रेवल करती है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला, धीमा क्यों न हो, लेकिन उस पावरफुल स्ट्रोक ने बाउंड्री को क्लियर किया और 4 रन मुरली के खाते में जोड़ लिए गए। चौथा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। शिवा आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं और नरोजा डॉक्टर जी शंकर बैनर छोर से और विकेट। ये गेंद पलट कर गेंद को खूबसूरती के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ गेंद को खेल दिया। 1 रन लेने का अवसर, इस 1 रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि लक्ष्य है 35 रनों का। और इस छोर से अगली गेंद मुरली के लिए, आगे निकले, गेंद को हवा में खेल दिया, कवर की दिशा में फील्डर, और क्या ऐसा भी हो सकता है, बहुत आसान मौका बनाया जा सकता था। कवर के फील्डर गेंद तक पहुंचे जरूर, और थोड़ा सा ढीलापन कहीं ना कहीं उनकी नजरें चूक गई और गेंद उनके हाथों से छूट गया। जीवनदान मिला मुरली को। हालांकि कहीं ना कहीं सारे दर्शक यही उम्मीद कर रहे हैं कि शानदार कैच के साथ ही एक बड़ा विकेट गिर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जीवनदान मुरली को प्राप्त हो चुका है। पलटकर गेंद को एक बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर की दिशा में थ्रो, विकेट पर गिर चुका है। इस बार शायद ही बचेंगे बैट्समैन मुरली। अंपायर ने संकेत किया कि तीसरा अंपायर इस वक्त भूमिका के लिए आएगा, एक्शन के लिए आएगा, बताने के लिए कि आखिरकार मुरली क्रीज में पहुंच गए या नहीं। डीजे थैंक यू। अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए और इसी के साथ मुरली की पारी समाप्त हो गई। क्या बात है, शानदार थ्रो। और हालांकि जीवनदान मिलने के पश्चात एक ऐसा अवसर जहां पर फील्डर ने गेंद को थ्रो कर दिया, स्टंप्स पर क्रीज से रह गए मुरली। हालांकि वो खुद बाउंड्री लाइन की दिशा में पहुंच गए। अंपायर दिनेश आचार हालांकि खुद जानते थे, लेकिन जो प्रश्न चिन्ह अंपायर के ऊपर उठते हैं, सवाल उठते हैं, उसको पूरी तरह से साफ करने के लिए निर्णय साफ साफ होना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने तीसरे अंपायर को यह जिम्मेदारी सौंपी।
कि पता लगाया जाए कि, और जिस तरह से मैं कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। दिनेश आचार्य और राघु ब्रह्मावर जो की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन मंजना नॉन स्ट्राइक एंड पर, किरण स्ट्राइक एंड पर है। भरत की गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर ने गेंद का पीछा करना छोड़ दिया है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक है, टाइमिंग और प्लेसमेंट, बाउंड्री लाइन के बाहर एक शानदार चौका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण अब धीरे से अपना हाथ खोल रहे हैं और शुरुआत में ऐसा लगा कि सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं। उस छोर से राउंड विकेट, पलटकर गेंद को उल्टे हाथ से स्विच हिट करने का प्रयास, चूक गई, लेंथ में ज्यादा थी गेंद, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, जिसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए। वो पुल स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में बहुत खूबसूरती के साथ, प्लेसमेंट के साथ किरण ने पुल किया था। आइए इस गेंद पर आते हैं। राउंड विकेट, ये गेंद दोबारा गेंद को पुल करने का प्रयास, लेकिन इस स्थिति में नहीं थे, शरीर से काफी नजदीक आई गेंद, लेंथ में ज्यादा थी, इतना आसान भी नहीं था जिसको पोजीशन बनाकर पुल करना, और इस वजह से चूक गए, शरीर का संतुलन भी नहीं बना पाए, थोड़ा सा झुक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक और गेंद हवा में खेल दिया, कैच होगा? जी नहीं, बाउंड्री लाइन की दिशा में गई है, शायद कहीं संकेत हो रहा है। अंपायर दिनेश जी ने हाथों को उठाया और कहा कि 6 रन है। जबरदस्त छक्के के साथ ही सिर्फ 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी जो कि चल रही है रंगा 11 की तरफ से, 34 रन उन्होंने बना लिए। 1 more run to get, सिर्फ 1 रन की दरकार। किरण का बल्ला बिल्कुल आग उगल रहा है। उस छोर से गेंद, राउंड विकेट, इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। भरत की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा स्विंग होकर, फ्लोट होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकले। विकेट कीपर गेंद को संभाल चुके हैं, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 1 more ball to go, अंपायर प्लीज नोट। एक गेंद अभी शेष बचा हुआ है और राघु ब्रह्मावर जी ने सर को हिलाते हुए सहमति दी। कभी कभार हो जाता है, और आफ्टर ऑल जैसा हम कहते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, और ऐसे में करेक्शन करने के पश्चात एक गेंद जो कि शेष बचा है। भरत गेंद को लेकर तैयार हुए किरण के लिए। राउंड विकेट, इस बार सम्मान दिया भरत ने, क्या बात है, लेकिन अंपायर कह रहे हैं बीमर थी, नो बॉल का संकेत किया है, फ्री हिट का अवसर है, और 1 रन के साथ इस मैच को रंगा 11 के इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। किरण ने शानदार स्ट्रोक्स लगाए और इस मैच को रंगा 11 ने लगभग 7 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और ड्रीम 11 ने अच्छा प्रयास किया, हालांकि रन स्कोर बोर्ड पर काफी कम बनाए उन्होंने, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन अगले मैच के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। और इससे पहले कि एक और मैच शुरू हो,